Hello aspirants, welcome to Environment course by UPSC Experts. This is class 6 of the course. Let's go to the class notes and start the class. See, in this class we are going to discuss about environmental pollution and various types of environmental pollution. See, pollution is defined as an addition or excessive addition of certain material to the physical environment of water, air, soil, making it less fit or unfit for life. That is called pollution, right? Easy definition, right? Then, if we under pollution, we will be discussing three areas of pollution majorly. One is air pollution, second is water pollution, and third is soil pollution, right? So, now let's discuss air pollution, right? See, air pollution, here we covered few aspects of air pollution, right? And while discussing, say, Minimeta Convention, we will discuss about mercury pollution. While discussing about greenhouse gases and greenhouse gas effect, we will be discussing about greenhouse gases, right? So here, basic main air pollutants we will be discussing. We will be dealing with air pollution, right? So now let's start with air pollution. So that is when air is contaminated by unwanted substances which have a harmful effect on both the living and non-living. It is referred to as air pollution. Simple definition you can read and understand. Air pollution, say we are adding carbon dioxide, we are adding, say, ozone, right? We are adding, say, nitrogen oxide, right? Which is detrimental to human health or non-living things, right? That is called air pollution, right? Then there are types of air pollution, that is primary pollutants, right? That is, it is any pollutant emitted directly from a source. Emitted directly from a source, that is primary pollutant. See, directly they emit from the source. If we see carbon dioxide directly emitted from thermal power plants, right? Right? NOx also emitted, right? Carbon monoxide. So they directly emit from the source as a carbon dioxide, carbon monoxide, NOx, etc. Right? Many pollutants are primary pollutants only. Then there are secondary pollutants. ये क्या है? ये डायरेक्टली रिलीज नहीं होते, राइट? दे मिक्स प्राइमरी पोल्यूटेंट्स. दीज आर फॉर्म्ड बाय इंटरैक्शन ऑफ प्राइमरी पोल्यूटेंट्स. एग्जांपल ओजोन, पैन, एसिड रेन एक्सेट्रा. वी विल बी डिस्कसिंग ओजोन कैसे बनती है, पैन क्या होता है, एसिड रेन क्या होती है, कैसे बनती है. All these things, primary pollutants, we with respect to each of the primary pollutants and secondary pollutant, we will be discussing in this class, right? Then major air pollutants. So major air pollutants are, right? See, these are major air pollutants, okay, which are discussed by, which are spelled out by American agency, that is Environment Protection Agency, right? So it has identified these as major air pollutants, right? So we will be covering it. So first is carbon monoxide, right? Carbon monoxide. Carbon monoxide is what? It is a gas. It is colorless, odorless, tasteless, and highly toxic gas. So it is a highly toxic gas, right? Carbon monoxide produced by, कहां से produce होता है carbon monoxide? Produced by incomplete burning of carbon based fuels. Incomplete burning of कार्बन बेस्ड फ्यूल्स इंक्लूडिंग पेट्रोल, डीजल एंड वुड. ठीक है, जो भी आइटम्स में कार्बन है, राइट? इफ यू सी, पेट्रोल में कार्बन है, डीजल में कार्बन है, वुड में कार्बन है, राइट? कार्बन इज फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक, राइट? सो व्हेन वी गो फॉर इनकम्प्लीट कंबशन, बर्निंग ऑफ these fuels, it would lead to carbon monoxide emission. Carbon monoxide is CO, right? Carbon monoxide emission, right? It is also produced from combustion of natural and synthetic products such as cigarettes, right? So combustion of cigarettes, basically it also has carbon. कार्बन में सिगरेट्स में भी इनकम्प्लीट बर्निंग होती है, राइट? उससे भी कार्बन मोनोऑक्साइड आती है, राइट? सो कार्बन मोनोऑक्साइड, सिगरेट्स इज व्हाट? सिगरेट्स हैज टोबैको. Tobacco is a plant. Plant has carbon, right? So when we go for incomplete burning of carbon based fuels or carbon based anything, right? Would be है, तो सिगरेट में क्या है? कुछ नहीं, टोबैको का पत्ता है, right? So there also will get carbon monoxide, right? Then it is more easily combined with hemoglobin than oxygen, hence lowers the amount of oxygen that enters our blood. So what it does, carbon monoxide, right? It lowers the amount of oxygen that enters our blood. So our blood requires oxygen. So blood में oxygen का content कम करती है carbon monoxide, right? So that we need to remember.
right? Now let's see next major pollutant, that is carbon dioxide. So carbon dioxide again is a colorless and odorless gas which is heavier than air, right? So carbon dioxide we will be discussing more in the greenhouse gases. While we discuss greenhouse gases, we will be discussing it is a principal greenhouse gas, right, emitted as a result of burning of coal, oil and natural gas. So again, if we burn coal, oil and natural gases, so carbon dioxide will be released, right? Then next is sulfur dioxide, SO2, right? It is also a toxic gas produced from burning coal, right? So that's why our focus is morely on green energy, green technology, green electricity generation, right? Solar energy generation, because burning of coal is leading to air pollution, right? Greenhouse gases, maybe we will be discussing how greenhouse gases are result of burning coal, right? CO2, SO2, NO2, carbon monoxide, all these come when we burn coal, right? So toxic gas produced by burning coal mainly in thermal power plants. So thermal power plants majorly use coal, so उधर से जो आएगा. Industrial processes like production of paper, smelting of metals also produce sulfur dioxide. Paper production में भी we burn certain things, right? We also use coal also in smelting of metals, right? So that leads to sulfur dioxide. It can lead to increased respiratory symptoms and lung diseases, right? And it is major contributor to smog and acid rains. We'll be discussing smog क्या होती है, acid rains को क्या होती है. There you will get more clarity, right? Then next is NOx, nitrogen dioxide, right? Or any nitrogen oxides, NOx, right? So it is also a toxic gas produced from burning fuels, including petrol, diesel, and coal, right? So all these are, जब भी पेट्रोल डीजल एंड कोल बर्न हो रहा है तो ये निकल रहा है, right? That you we need to take. It can lead to irritation and inflammation of lungs, breathlessness, causes bronchitis and asthma, right? It is a major contributor of smog and acid rains. Again, acid rains and smogs में while discussing these we will be discussing, right? So ये important है, देखो कितने बार आ रहा है acid rain and smog. We need to remember. Questions भी आ चुका है, we will be discussing them also, right? Then आता है next is particulate matter. ठीक है, particulate matter क्या होती है? जब भी whenever we burn coal, right, whenever we burn पेट्रोल डीजल एक्सेट्रा या बायोमास, ठीक है, छोटे छोटे माइन्यूट पार्टिकल्स, राइट? पीएम में पार्टिकुलेट मैटर में PM10 है, दैट इज साइज्ड 10 micrometers or less in diameter, right? So whenever, see, PM is a mixture of solid particles and liquid droplets found in the air. These are particulate matter, small particulate matters. जब भी कुछ भी बायोमास जैसे स्टबल बर्निंग किया, पार्टिकुलेट मैटर रिलीज हो जाएंगे, राइट? छोटे छोटे, राइट? कोल बर्न किया, particulate matters will be released. So it is solid particles, small solid particles, and they interact with liquid droplets, right? They interact with liquid droplets, and so the combination of solid particles and liquid droplets is called particulate matter found in the air, right? So PM10 are inhalable particles sized 10 micrometers or less in diameter, right? And PM2.5 are fine inhalable particles sized 2.5 micrometers or less in diameter. Again, PM10 इससे छोटा है, so PM2.5 are more dangerous, right? उसपे भी क्वेश्चन आया हुआ है, so we'll be studying it there, right? So these are more harmful to health, that is PM2.5 are more harmful to health as they move freely with air current and block tiny pores in our lungs. सीधा when we जब सांस लेते हैं तो अंदर जाएंगे, सीधा लंग्स के टाइनी पोर्स है, उन पे इफेक्ट करेंगे, उन पे स्टिक करेंगे, राइट? इनफैक्ट समटाइम्स दे क्रॉस एंड दे मिक्स इन आवर ब्लड आल्सो, राइट? सो दे आर वेरी डेंजरस. देन व्हीकल्स, पावर प्लांट्स, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज एक्सेट्रा रिलीज पार्टिकुलेट मैटर. कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में भी छोटा छोटा पार्टिकल्स रिलीज होता है, राइट? व्हीकुलर एमिशंस, राइट? देयर आल्सो विल बी releasing. So again, very important, there is a question where we will be discussing more on particulate matter. You will get more clarity, right? Now there is next one, that is ozone, right? Again, ozone is a secondary pollutant. Ozone is what? O3, right? So ozone, right, ozone occurs naturally in stratosphere. Stratosphere में ozone है, right? Ozone layer we talk about,
that we discuss when we discuss about Montreal Protocol. We'll be discussing about natural ozone layer, etc. Right? How it is formed, how it is getting destroyed. Right? So ozone जो naturally occur होता है stratosphere में, right? In geography you have studied about lithosphere, troposphere, stratosphere, etc. Right? जो ऊपर layers of atmosphere में ozone is naturally occurring, right? And it is good ozone. It is called good ozone because it benefits, because it acts as a shield to earth, protecting it from harmful UV radiation from the sun, right? जो stratosphere में होता है वो good ozone होता है because that protects human beings, that protects our earth, right, from harmful sun radiation, right? However at ground level it is a pollutant with highly toxic effects, right? But ground level में जब ओजोन हम निकालते हैं, राइट, या निकलता है, ठीक है, या बनता है, that is bad ozone because highly toxic effects. Hence ozone in troposphere is called bad ozone, right? Bad ozone. Then ozone at ground level is a secondary pollutant, right? ऐसा नहीं कि जैसे बर्न हो गया सीधा ओजोन ही आ गया, राइट? ओजोन फॉर्म होता है, राइट? ओजोन इज सेकेंडरी पोल्यूटेंट एट ग्राउंड लेवल, formed when two primary pollutants, NOx and volatile organic compounds react in the presence of sun. So ये point important है. See, ओजोन कब फॉर्म होती है? जब NOx and volatile organic compounds, this also we will discuss what are volatile organic compounds, we will be discussing, react in the presence of sunlight. This is also very important, presence of sunlight and stagnant air, right? So जब जैसे rainy season है, right, और winter season है, right, there we see less ozone formation. Ozone is mostly formed in summer because it needs sunlight, presence of sunlight, right? So ozone is what? Ozone is O3 क्या है? सनलाइट क्या करती है? सनलाइट सी नॉक्स है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, सो से नाइट्रोजन ऑक्साइड से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, राइट? सो सनलाइट व्हाट इट डज इज, सो NO2 में 2 ऑक्सीजन है, राइट? सो इट ब्रेक्स डाउन 1 ऑक्सीजन फ्रॉम NO2 और एनी नॉक्स से ऑक्सीजन को ब्रेक करेगा एंड it mixes with the oxygen O2 present in the air, right? So then it becomes O3, right? So this is important. NOx and volatile organic compounds, right, when they react, right? volatile organic compounds में actually क्या होता है? volatile organic compounds में कार्बन वगैरह होता है, right? So कार्बन एक्सेट्रा मिलके फॉर्मेशन बनने में हेल्प होती है, right? So you need to remember, so in the presence of sunlight, so this is very important point, ठीक है? So ozone is secondary pollutant formed when two primary pollutants, that is NOx and volatile organic compounds, react in the presence of sunlight, right? Sunlight and stagnant air भी थोड़ा stagnant होना चाहिए, speed flowing air नहीं होना चाहिए, right? So ये तो stagnant air इतना important है, but presence of sunlight is very essential, ठीक है? Because वो ही break करती है and O3 form करने में help होती है, right? Then excessive ozone in the air can have a marked effect on human health. It can cause breathing problems, trigger asthma, and reduce lung function and cause lung diseases. So that's why ozone is very bad, right? Bad ozone at ground level, right? Again, very important ozone, right? This is very important. You need to remember it, right? Then next आता है volatile organic compounds. Volatile organic compounds. See, what are volatile organic compounds, right? Let us discuss. Volatile organic compounds are organic compounds है. So organic compounds means they must be having organic material, that is carbon, right? Carbon होगा, right? Volatile, what does volatile signify? See, organic compounds, so organic materials we have discussed, right? Organic compounds. Volatile, they are volatile because they have, you can note it down here, volatile organic compounds have high vapor pressure, high vapor pressure, high vapor pressures, right, comma, low boiling point, right? Low boiling point
at room temperature, right? Low boiling point at does a vapor become vapor at room temperature or low temperatures also, right? So are volatile because volatile organic compounds have high vapor pressures, right? So जल्दी vapor बन जाते हैं, right? And low boiling point है, कम temperature में भी वो vapor बन जाता है, right? So that we need to remember. Volatile organic compounds are those compounds which have organic material carbon, right? And they are volatile because they have high vapor pressures and low boiling points thus become vapor at low temperatures. Even room temperature में भी ये vapor बन जाते हैं, right? So अब generally क्या हो रहा है? Volatile organic compounds where we are using in paints, right? We are using in furniture polish, we are using in hairsprays, right? So all this, see, we are using them, see, they are emitted as gases, right? So let's read it. See, volatile organic compounds are large group of carbon based chemicals that easily evaporate at a room temperature. Room temperature में vapor बन जाएंगे, gases बनाएंगे. Example is, see, most important example is formaldehyde and benzene. This you need to remember, right? So अब देखो, अभी we are using more than 10,000 plus volatile organic compounds, right? So जैसे मान ले क्वेश्चन आ गया, which of the following are volatile organic compounds, right? So which of the following are volatile organic compounds? So the options are there. So उसमें formaldehyde तो होगा ही होगा, right? Benzene तो होगा ही होगा. So these two you will identify, and others also if they have carbon element, right? So you need to be ब्रॉड. जैसे 5 ऑप्शन दिया तो यू कैन गो फॉर 5, राइट? एटलीस्ट जो मान ले वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, राइट? ऐसा दिया है तो दैट यू कैन एलिमिनेट, राइट? रेस्ट यू नीड टू बी वेरी ब्रॉड, राइट? सो ज्यादा से ज्यादा लेने की उसमें होना चाहिए, राइट? देन दे आर एमिटेड एज गैसेस फ्रॉम सर्टेन सॉलिड्स और लिक्विड्स, राइट? जो इनमें यूज होता है पेंट्स वगैरह में, राइट? जब मान ले पेंट कर लिया हम घर में बैठा, राइट? सो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स निकलते रहेंगे, राइट? सो दैट्स व्हाई, सो लाइक पेंट्स, हेयर स्प्रेस, फर्नीचर पॉलिश, ग्लूस, एडहेसिव्स, परमानेंट मार्कर्स, बिल्डिंग मटेरियल्स एक्सेट्रा, इन सब में वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स निकलती है, राइट? सो इट इज वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ इंडोर एयर पोल्यूशन, राइट? So volatile organic compounds were one of the main cause of indoor pollution, right? Indoor air pollution. So you need to remember that. Then they can cause irritation of the eyes, nose and throat, damage liver and kidney, right? So that's why they are again important, right? Formaldehyde and benzene are important volatile organic compounds, and volatile organic compounds are used in here and they are causing pollution, right? इंडोर एयर पोल्यूशन का मेजर वो है, राइट? नाउ लेट्स सी नेक्स्ट. दिस इज फ्लाई एश. सो फ्लाई एश इज व्हाट? इज बाई प्रोडक्ट ऑफ कोल बेस्ड पावर जनरेशन. जैसे कोल बर्न किया, राइट? विल बी डिस्कसिंग इट. लेट्स, इट्स इजी, ज्यादा कुछ वो करने के लिए भी नहीं है, एंड देयर आर क्वेश्चंस आल्सो, 2 क्वेश्चंस विल बी डिस्कसिंग देयर आल्सो. सो इट इज बाई प्रोडक्ट ऑफ कोल बेस्ड पावर जनरेशन. इट इज फाइन पाउडर विद सब्सटेंशियल अमाउंट. जब कोल को बर्न करते हैं, ठीक है, बर्न करने के बाद ये वेस्ट निकलता है, उसको फ्लाई एश बोलते हैं, राइट? सो इट इज फाइन पाउडर लाइक सब्सटेंस विद ऑक्साइड्स ऑफ सिलिका, अल्यूमिनियम एंड कैल्शियम. इट आल्सो कंटेन्स ट्रेसेस ऑफ आर्सेनिक, बोरॉन, chromium, lead, etc. So all these are pollutants which leads to air and water pollution if disposed on land, right? So with nearly 55% of our total power production is through coal and lignite based thermal power plants, and Indian grade coal has high ash content. ठीक है, ये भी important है, high ash content. So fly ash generation in India is very high, right? So high ash, Indian coal has high ash content, right? So Indian coal से ज्यादा ही fly ash बनती है, right? And इसमें ये pollutants है, so ये नुकसानदायक है. It can lead to air and water pollution, right? Currently 83% of India's fly ash
is utilized by cement industries. Government has bought a policy, right, which was, right, cement industries and reclamation of low-lying lands, roads and flyover construction, etc. वो उनसे fly ash से bricks बना सकते हैं, right, and it can be used in cement, right, it can be used in construction of roads, flyovers, etc. So government is pushing for 100% utilization of fly ash to reduce air pollution, right. अभी भी 83% of fly ash जो भी coal उससे आ रहा है, तो we are able to use it for other purposes rather than leaving it on land, right. So अभी government का target है 100% utilization of fly ash, right. So now let's see. So major pollutants we have discussed, right. So now, so उस पे क्वेश्चंस भी करेंगे pollutants पे, there you will get more clarity, right. So now let's see about indoor air pollution, right. Indoor air pollution जो indoor areas में होती है, it is a very easy topic, right. You can just read and understand it. See, indoor air pollution is degradation of indoor air quality by harmful chemicals and other materials. ठीक है, indoor air quality जैसे घर के अंदर है, राइट, इंडोर एयर पोल्यूशन होगा, राइट, घर के अंदर भी पोल्यूशन होगा, ये भी डेंजरस है, राइट. देन मेजर इंडोर एयर पोल्यूटेंट्स आर radon. Radon is a major indoor air pollution. So radon is invisible radioactive atom gas that results from the radioactive decay of radium, which may be found in rock formation beneath buildings or in certain building materials. So radon is second most frequent cause of lung cancer आफ्टर सिगरेट स्मोकिंग, राइट. सो रेडॉन है, ये इंडोर एयर पोल्यूटेंट है. इनफैक्ट जो गांव में घर बनते हैं ना, उनके मिट्टी से भी रेडॉन निकलती है. सो दैट इज मेजर कॉज ऑफ इंडोर एयर पोल्यूशन. सो यू नीड टू रिमेंबर इट. रेडॉन इज a major cause of indoor air pollution and it is the major second most frequent cause of lung cancer, right. Then आता है volatile organic compounds. We have discussed what are volatile organic compounds, right. So volatile organic compounds जब paints में use करते हैं, air fresheners में use करते हैं, wood preservatives में we are using it, furniture and glues, varnishes, etc. release many volatile organic compounds and volatile organic compounds are detrimental to our health. We have discussed, right. Then microorganisms like bacteria, fungi or mold, yeast, mites and viruses etc. are indoor air pollutants. Indoor में घूमती रहती है, right. So air pollutants. Then airborne particles like dust, smoke and pollen etc. are also indoor air pollutants. Then household odors and gases from cooking odors, pet smells, cigarette smoking and drain smells. Drain smells भी pollutants, many gases would be released, right. Then आता है, right, in rural areas people relying on traditional fuels such as firewood, charcoal and cow dung for cooking and heating act as major source of indoor air pollution. In urban areas construction of more tightly sealed buildings, reduced ventilation, use of synthetic materials for building and furnishing etc. are cause of indoor air pollution, right. Then effects of air pollution, right. Indoor air pollution हमने देखा. Effects of air pollution, social impact, impact on health, impact on vulnerable sections, right. Health पे impact, lung cancer, right, all the diseases, asthma etc. So it has social impact on health, right. And environmental impact, impact on animals, impact on biodiversity, it leads to eutrophication, right. It leads to acid rains, it leads to ozone layer depletion and it leads to smog formation etc. So environmentally negative impact है. Economic impact, loss of labor productivity, right. When जब disease वगैरह आता है तो labor productivity they cannot work, out of pocket medical expenditure and burden on exchequer government to address air pollution, water pollution etc. Then so these are the effects. So out of these effects, like these are the acid rain is the one of the effect of air pollution and smog phenomena is also another effect of air pollution. So these are important. So let's understand them, right. So what is acid rain, right. So acid rain is the rainfall that has been acidified. सिंपल टर्म्स में बताया, rainfall that has been acidified. So फिर क्या होता है, rainfall कैसे acidify होता है, let's understand it. See, normally rainwater has a pH of 5.6, has a pH of 5.6 due to presence of hydrogen ions, right. Rainwater has pH of 5.6 due to presence of हाइड्रोजन आयंस. जो नॉर्मल रेन वाटर है वो भी
5.6 है, that means that itself is acidic, right? 5.63 pH 7 से कम है, that is acidic. But normal rainwater is of pH due to presence of pH 5.6 क्यों है? Due to presence of hydrogen ions. Hydrogen ions, ठीक है, formed by the reaction of rainwater with carbon dioxide present in the atmosphere, right? जैसे when rainwater react with carbon dioxide present in the atmosphere, उसकी वजह से नॉर्मल रेन वाटर का पीएच है 5.6 है, राइट? ये इंपॉर्टेंट है, ये 5.6 pH of normal rainwater you need to remember, right? Then but when pH of rainwater drops below 5.6, it is called acid rain. So acid rain is when pH of rainwater is below 5.6, we call it acid rain, right? So acid rains occur when क्या होता है? When nitrogen oxides, that is NOx, and sulfur dioxide, right, interact with rainwater to form nitric acid and sulfuric acid and fall to earth, right? So rainwater जो clouds जब form होता है, ठीक है, और जब बारिश भी होती है, तो in the process, so they react with nitrogen oxide. So acid rain means one thing you need to remember is NS. जो नेचुरल साइंस बोलते हैं ना, सो नेचुरल साइंस सब्जेक्ट लाइक थिंग, सो एनएस यू कैन रिमेंबर. सो एसिड रेन इज फॉर्म्ड बाय नॉक्स एंड सल्फर डाइऑक्साइड, राइट? एनएस यू कैन रिमेंबर, राइट? क्वेश्चंस भी आ चुके हैं 2 बार, वी विल बी डिस्कसिंग दैट, राइट? सो एसिड रेन अकर व्हेन नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एंड सल्फर डाइऑक्साइड इंटरैक्ट विद रेन वाटर से इंटरैक्ट करके, right, when they interact, so they form nitric acid HNO3 and sulfuric acid, that is H2SO4, right? So that is called acid rain. ग्राउंड में ये केमिकल्स पानी के साथ आएंगे, right? That is, so this is the formula: NOx plus SO2 plus moisture is rain water, right, plus oxygen भी present होता है, so that leads to acid rain, that is HNO3 plus H2SO4, right? So that is the acid rain, right? Then आता है effects of acid rain. So effects of acid rain is, so it leads to soil acidification. जब बारिश आके पानी में, खेतों में वगैरह, फॉरेस्ट में होता है, so it leads to soil acidification होता है, right? And it leads to ocean acidification. Ocean भी acidification because बारिश oceans में भी होता है, so ocean acidification again we will be studying, right? Ocean का भी acidification होता है, right? So that is ocean acidification. Then corrosion of metals and weathering of stone buildings and statues, right? So example, Taj Mahal's white marble turning to pale and yellow due to acid rains, right? Then microbial species in the soil and water shift from bacteria bound to fungi bound. Again, this is very important because of acid rains से क्या होता है, soils and water में जो बैक्टीरिया होता है वो कम होके फंगाई बढ़ जाती है, because as most fungi prefer acidic environment. So soils and water में fungi increase होते हैं acid rains, right? So you need to remember that, right? This is again very important point. So microbial species in soil shift from bacteria bound to fungi bound, as most fungi prefer acidic environment, right? So acid rain inhibits the activity of nitrogen fixation bacteria. by nitrogen fixation bacteria होता है, right? उनको कम करेगी because ये फंगाई ग्रो करने में हेल्प करेगी, राइट? बैक्टीरिया को मार देगी, राइजोबियम एक्सेट्रा, राइट? वी हैव स्टडीड नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, राइट? राइजोबियम, राइट? सो ऑल द थिंग्स उनको कम करेगी. सो जब नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कम होता है, सो दैट एडवर्सली अफेक्ट्स प्लांट्स. सो एसिड रेन अफेक्ट ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड किल्स एक्वेटिक एनिमल्स, राइट? एक्वेटिक एनिमल्स को भी मार देते हैं. सो दैट्स व्हाई एसिड रेन इज डेट्रीमेंटल, वी नीड टू स्टॉप इट. सो कैसे स्टॉप करना है एसिड रेन? भाई जिनसे जो फॉर्म हो रही है उनको कम करना है. सो नॉक्स कहां से रिलीज हो रहा है? वी हैव डिस्कस्ड, सी कोल थर्मल पावर प्लांट्स, सल्फर डाइऑक्साइड, थर्मल पावर प्लांट्स इज द मेजर. सो अगर इनको कम करेंगे, ठीक है, इंटरैक्ट ही नहीं करेंगे पानी, सो एसिड रेन नहीं होगा, राइट? सो देन लेट्स डिस्कस अबाउट द स्मॉग, राइट? स्मॉग,
right? Again, very important, right? Smog is a combination of smoke and fog. Smoke and fog, right? Smoky fog. There are two types of smog. One is sulfurous smog or London smog, and second is photochemical smog or Los Angeles smog, right? So photochemical smog is most important, right? So sulfurous smog or लंदन स्मॉग ये लंदन स्मॉग क्यों है? बिकॉज लंदन में व्हेन इंडस्ट्रियलाइजेशन इज हैपनिंग, राइट, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे हो रहा था? दैट इज कोल बर्निंग से हो रहा था, राइट, एंड कोल बर्निंग से ज्यादा क्या निकलेगा? दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगा, राइट. सो स्मॉग it results from high concentration of sulfur oxides in the air caused by the use of sulfur bearing fossil fuels, particularly coal being primary source of power in London. So इसीलिए इसको लंदन स्मॉग बोलते हैं. So ऐसा कैसे याद करना है? लंदन स्मॉग हुआ लंदन में कब हुआ? जब कोल बर्निंग से ज्यादा एनर्जी यूज कर रहे थे. सो कोल बर्निंग से ज्यादा क्या निकलेगा सल्फर डाइऑक्साइड, राइट. सो इसीलिए इट इज कॉल्ड सल्फ्यूरस स्मॉग, राइट. यू नीड टू रिमेंबर इट. Sulfurous smog or London smog, right? The next is photochemical smog. So photochemical is, see, photo means what? Light, right? So photochemical smog is formed in sunlight, when sunlight is there, right? So now let's discuss. It is formed when nitrogen oxides. So ये अगर सल्फर ऑक्साइड से बन रही है सल्फ्यूरियस स्मॉग, सो फोटोकेमिकल स्मॉग बनती है when nitrogen oxides NOx, ozone, NOx, ozone, volatile organic compounds, ozone and volatile organic compounds interact in the presence of sunlight. This is very important. ठीक है, फोटोकेमिकल स्मॉग भी इसीलिए बोलते हैं बिकॉज इट नीड्स सनलाइट, राइट. सनलाइट में ही फोटोकेमिकल स्मॉग बनेगा, राइट. So when NOx, ozone and volatile organic compounds interact in the presence of sunlight, it is also called as summer smog as it needs sunlight for its formation, right. जैसे ओजोन भी है, ठीक है, ओजोन भी कब फॉर्म होगा? सनलाइट में, we have discussed. So फोटोकेमिकल स्मॉग भी जब ओजोन फॉर्म होगा, अब ओजोन भी चाहिए, राइट. सो नॉक्स भी चाहिए एंड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. सो इट इज समर में ये ज्यादा होते हैं, right. It is caused by the action of solar ultraviolet radiation on polluted air, right. So इसीलिए it is called summer smog or photochemical smog, right. Then ये हो गया smog we have studied. So now let's discuss initiatives to control air pollution in India, right. Air pollution. So National Air Quality Monitoring Program, right. Air quality monitoring program and data dispersal वगैरह करना है. So the Central Pollution Control Board has been executing this nationwide program of ambient air quality monitoring, right. See, ये इतना important नहीं है, that's why I tried to be as brief as possible, right. So National Air Quality Monitoring Program, right, ये कौन करता है? Central Pollution Control Board, right. So Central Pollution Control Board will be discussing ये क्या है while we discuss acts. किस एक्ट पे बना है, right, क्या है इनका पावर्स, we'll be discussing all these things, right. Everything will be covered, right. Don't worry कि सर सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड क्या है, उसको रिसर्च करूं क्या? नो, आई हैव डन ऑल द रिसर्च and I have provided everything in the notes, right. So you just complete the entire classes, right, then you will understand ki how much is covered, right. All the important things are covered in the classes, right, and notes is provided in the class notes. So you just need to watch the classes, right, understand things, then get the notes print out and read and revise the notes multiple times, right. So I have made the course very comprehensive because every year 17 to 18 questions are asked from environment and it is a very dynamic subject, right. So I try to be as comprehensive as possible and at the same time I also focused on not overburdening you with content. ठीक है, मान ले सब कुछ दे दिया, मान ले इधर मैं चाहिए तो मैं नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम पे भी आई कैन मेक 2 pages ऑफ नोट्स, राइट. बट वो करना ही नहीं है बिकॉज अननेसेसरी चीजें आपको पढ़ाना ही नहीं है, राइट. सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एज ए टीचर
राइट, व्हाट नॉट टू टीच टू स्टूडेंट्स, राइट, क्या पढ़ाना है वो इंपॉर्टेंट है। अब जैसे स्मॉग है, राइट, आई हैव फोकस्ड हियर, राइट, एंड आई हैव डन क्वेश्चंस आल्सो, क्वेश्चंस भी आया स्मॉग पे, वो भी सॉल्व करेंगे। एसिड रेन पे क्वेश्चंस आया, वो भी सॉल्व करेंगे, उधर भी डिस्कस करेंगे। आई विल मेक यू रिमेंबर, राइट, स्मॉग ये होता है, वो जोन ये होता है, राइट, एसिड रेन ऐसा होता है। आई विल मेक यू रिमेंबर थिंग्स इन द क्लास इटसेल्फ, राइट, बट ऐसा अनइंपॉर्टेंट चीज है, मैं अननेसेसरली उन पे ज्यादा स्ट्रेस नहीं करूंगा, राइट। आई नो व्हाट इज इंपॉर्टेंट, जिनसे क्वेश्चन आ रहा है वो इंपॉर्टेंट है, राइट। सो नाउ लेट्स डिस्कस, सी, नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, राइट, नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नॉक्स, राइट, नॉक्स। सो अगेन, सो अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, सो इसीलिए मैं इसको कवर किया, राइट। सो नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स अब क्या है, अंडर एयर पोल्यूशन, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981, सी, ये एक्ट भी पढ़ेंगे, राइट। We have discussed, there is a separate chapter on important environmental related acts. There we will be discussing all the important acts related to environment, right? Then under acts, the Central Pollution Control Board has notified NACS, right? That is National Ambient Air Quality Standards. It measures air quality based on 12 pollutants. 12 pollutants को use करके एयर क्वालिटी मेजर करती है, राइट। एंड व्हाट आर दीस 12 pollutants? We need to remember these 12 pollutants, राइट। सो कैसे रिमेंबर करना है, देयर इज ए ट्रिक, राइट। सो चलो, 12 pollutants are, these 12 pollutants are this: sulfur dioxide, nitrogen dioxide, PM 2.5, PM 10, ozone, lead, carbon monoxide, arsenal, nickel, benzene, ammonia, benzopyrene, right? Now how to remember them, right? So how to remember these 12? So there is, C. One is Lano. Lano. Yes. Lano. L is lead. Please note it down. See, L is lead. A is arsenic. And second A is ammonia. Right? Ammonia. And N is nickel. And O is ozone. O is ozone, that is O3. So Lano, so we have covered 5. So right, अभी ये बार बार आपको रिवीजन करना है, राइट। सो Lano, LAANO, we have covered 5. Then आता है NOx and SOx, NO2, SO2, राइट, ये 2 हो गया, 7. So these 2 are done, राइट, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, राइट। देन आता है 2, PM 2.5 एंड PM 10, ये 2 हो गया। सो वी आर डन विथ 9। एंड नेक्स्ट इज बेंजीन एंड बेंजोपाइरीन, बेंजीन एंड बेंजोपाइरीन हो गया, राइट। सो वी आर डन विथ 11, राइट। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. सो इन दो को दो पेज PM, सी, नॉक्स, सॉक्स, राइट, NS जिनसे एसिड रेन हो रही है, राइट। देन PM 2.5, PM 10, देन बेंजीन, बेंजोपाइरीन, राइट, दो में याद कर लिया। देन बचा हुआ कार्बन मोनोऑक्साइड, राइट, दैट इज CO। एंड हियर ये अकेला, ये याद कैसे करना है, अब देखो, सी, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है इसमें। अब जब पूछेंगे ऑप्शंस में कार्बन डाइऑक्साइड जरूर होगा, राइट, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट पोल्यूटेंट है, ग्रीन हाउस गैस है। हम लोग सोचेंगे कि ये तो होगा ही होगा, सो विल मार्क इट, बट इट इज नॉट यूज्ड इन मेजरिंग एज पर नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, ठीक है। जो 12 पोल्यूटेंट्स जो यूज कर रहे हैं वो ये है। सो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है। सो दीज आर द 12, लैनो एंड द 2 सेट ऑफ पेयर्स एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, राइट, इंस्टेड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो ये तो आएगा whenever question is there, right? Carbon monoxide you need to, and carbon dioxide is not there, carbon dioxide भी होगा, so उसको eliminate करना है, right? Then बाकी बचा हुआ lano, right? So you need to remember, right? Now let's see. Then next we have taken National Air Quality Index, right? So it was launched in 2015 Air Quality Index बताता है, right? It has 6 categories of air quality, 6 categories that are good, ठीक है, satisfactory, moderately polluted,
poor, very poor and severe, right? With a distinct color scheme, right? सबको एक एक कलर, गुड है तो एक कलर होगा, सेटिस्फैक्ट्री है तो अलग कलर, राइट? विथ डिस्टिंक्ट कलर स्कीम, वेरी सिवियर, पोर है तो अलग अलग कलर, सबका अलग अलग 6 कैटेगरीज में, राइट? ईच ऑफ दीज कैटेगरीज आर एसोसिएटेड विथ likely health impacts, right? AQI considers 8 pollutants, right? So air quality index considers 8 pollutants, right? अब ये 8 pollutants भी वो 12 pollutants में पार्टी है, right? Right? Here also देखो, here also carbon monoxide is there, CO2 is not there, right? You need to remember, these 8 are part of these 12 only, right? So देखो, NOx, SOx, right? दो, PM2.5, PM10, right? And ozone is there, ammonia is there, and lead is there, right? Lead is there, right? So carbon monoxide is there and carbon dioxide is not there. So carbon dioxide will be asked, air quality index bhi hai, right? So these are there. So carbon dioxide is there, carbon monoxide is there, sorry, carbon monoxide is there, carbon dioxide is not there. That you need to remember, right? Then National Clean Air Program, right? Next is National Clean Air Program. It is a comprehensive pan India air pollution mitigation program for 102 cities and was introduced in 2019. Basically cities में जो air pollution है उसको reduce करने के लिए introduced National Clean Air Program. Then BS6 norms, right? BS6 norms for vehicles, right? All the newly manufactured, sold and registered cars must adhere to BS6, Bharat Stage 6 norms, right? Car manufacturers are required to install 3 new types of equipments to vehicles in vehicles to lower, that is diesel particulate filter and selective catalytic reduction system. ये SO2 emit करने में हेल्प करेगी. देन लीन नॉक्स ट्रैप, सो नॉक्स को कम करने के लिए करेगी ये, राइट? डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर, ये पार्टिकुलेट मैटर्स को वो करने के लिए हेल्प करेगी. सो BS नॉर्म्स में ये तीनों होना चाहिए. यू नीड टू रिमेंबर दिस: डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर, सेलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन सिस्टम, राइट? एंड लीन NO2 ट्रैप, राइट? ये तीनों होना चाहिए, राइट? दीज थिंग्स यू नीड टू रिमेंबर, राइट? Now let us understand few devices used in removing pollutants, right? So pollutants, air pollutants को remove करने के लिए कुछ technologies, devices use कर रहे हैं उसके बारे में. So we are using filters. So filter are used to remove particulate matter, right? Filters use. Then electrostatic precipitators, right? Electrostatic precipitators are used in boilers and furnaces of thermal power plants, cement factories and steel plants, etc., and can remove 99% of particulate matter, right? So electrostatic precipitators में क्या? And electrostatic precipitators have electrode wires that are maintained at several thousand volts. High temperature में electrode wires को रखते हैं, which produce a corona that releases electrons. These electrons attach to dust particles giving them negative charge, right? जो electrons है वो dust particles को चिपक जाएंगे. The collecting plates are grounded, having positive charge, right? Positive charge, and they attract the charged dust particles, right? So electrostatic precipitators में basically जैसे मान ले हम electrode wires use करते हैं, right? जैसे electrode wires, right? So electrode wires, they have negative charge, right? So they attract dust particle. जो भी pollutants आ रहा है, right? वो dust particles को attract करेंगे and नीचे plates में होगा positive charges and they fall back to, right? And we will collect particulate matters. So that's what electrostatic precipitators do, right? Then next is scrubbers. So scrubbers are wet collectors, right? Mostly जो हम vapor वगैरह use करके, right, SO2 को collect करते हैं. So scrubbers are wet collectors mostly used to remove pollutants like sulfur dioxide. So what you can remember is S से sulfur dioxide. See, these are things mentioned in the NCERT, right? So NCERT से use किया, so they are important. So scrubbers are used in sulfur dioxide. They remove pollutants like sulfur dioxide, right? ये याद करना है. Scrubbers, S, sulfur dioxide, right? Then आता है catalytic converter, right? Catalytic converters having
expensive metals like platinum, palladium, and rhodium as catalysts. So catalysts, and they are fitted catalyst key converters. Catalysts are these expensive metals are fitted in automobiles for reducing emissions of poisonous gases. Right? Automobiles में catalytic converters fix करते हैं इंजन में. Right? So they are fitted into automobiles for reducing emission of poisonous gases. So motor vehicles, ठीक है, जो भी automobiles में catalytic converters use करता है, equipped with catalytic converters should use unleaded petrol. ये important point है. Should use unleaded petrol because the lead in the petrol inactivates the catalyst. Right? Inactivates the catalyst. Right? So इसीलिए unleaded petrol use करना है. Right? Leaded petrol will make catalytic converters ineffective. Right? Right? Catalytic converters inactivates the catalyst. So unleaded petrol, it is again very important point. Right? So जो भी use करना है, because नहीं है तो वो फायदा नहीं होगा. Right? So क्योंकि expensive metals use कर रहे हैं, cost बढ़ेगा. Right? अगर unleaded petrol use कर रहे हैं तो भाई फिर वो नुकसानदायक है. So this is again in fact limitation है. Right? So these are the things. Now let's discuss questions. Now let's discuss questions asked from air pollution topic. See, this is question asked in 2024. Right? See, we'll be discussing all the PYQs, and PYQs we will be using it as a content, as a knowledge enricher. Right? So जो main content में cover नहीं है, right? And PYQs में है covered है. So here we have discussed PYQs का content, right? So we'll use it as a content, right? See, according to Environmental Protection Agency, which of the following is the largest source of sulfur dioxide emissions? Sulfur dioxide emissions. Again, this is one of the easiest questions of 2024 paper, because we know the largest source of sulfur dioxide is what? Sulfur dioxide is majorly produced when power plants using fossil fuels, coal burning से आ रहा है. Right? So this is the answer. See, rest other options. See, locomotives using fossil fuels, that is vehicles using fossil fuels, ships using fossil fuels. We know भाई इतना ये इससे pollution होगा, sulfur dioxide निकलेगा, but ज्यादा नहीं है. Extraction of metals from ores, no. Right? And locomotives using fossil, इन दोनों में doubt हो सकता है, but we know power plants are the major enemy. Right? So power plants जैसे basically coal burning is a major enemy. Right? Power plants using fossil fuel, that is coal, is a major source of sulfur dioxide. Right? And see, Environmental Protection Agency is an independent agency of United States government. US government का organization है that is tasked with environment protection matters. Right? So it is a US government agency, Environmental Protection Agency. Right? According to Environmental Protection Agency, the largest source of SO2 in the atmosphere is burning of fossil fuels by power plants and other industrial facilities. Right? Smaller sources of SO2 emissions include industrial processes such as extracting metal from ores, natural sources such as volcanoes, right? Locomotives, ships, and other vehicles and heavy equipments that burn fuel with a high sulfur content. Right? And extra useful information, recently India has ranked as the largest emitter of sulfur dioxide in the world. India is the largest emitter of sulfur dioxide in the world. So next time this can be the option in our question, right? So India is the largest emitter of sulfur dioxide in the world. That we need to remember, right? Now let's see next question. That is C, question asked in 2016 paper, right? So in the cities of our country, which among the following atmospheric gases are considered in calculating the value of air quality index? So air quality index में क्या क्या gases लिया? So अब देखो, carbon dioxide नहीं है, right? Carbon monoxide is there, right? So one is not there, so one eliminate करो. So question हो गया. So you need to remember carbon dioxide नहीं है. Air quality index we have studied, right? So 8 है, air quality index में 8 pollutants है, right? बाकी NOx में, NOx National Ambient Air Quality Standards, so इसमें 12 है. So 12 is what you need to remember. So that is LANO, sorry, LAANO, right? Then PM 10, PM 2.5, right? Then
SO2, NO2, that is NOx, SOx, right? Right, NOx, SOx, then benzene parine, right? Then carbon monoxide, right? So carbon monoxide is there, carbon dioxide is there, NOx, SOx is there, right? And methane is not there, right? Methane is not there. जो इनमें है उन्हीं में से ये भी है. So methane भी नहीं है. So 2, 3, 4 are the answers, right? We have discussed. Now let's see the explanation, right? See. National Air Quality Index was launched in 2015. It has 6 categories of air quality, good, bad. We have discussed, right? The Air Quality Index uses considers air pollutants, right? All these, right? We have discussed, right? Then next is uh, question asked in 2019. That is, consider the following: which of the above are released in atmosphere due to burning of crop or biomass residue. Burning of crop or biomass residue, which of them will be released? See, major pollutants, carbon monoxide is there, right? Methane is there, ozone is there, it releases ozone forms, right? Ozone is formed, right? When, because ozone क्या है? Ozone क्या? नाइट्रोजन ऑक्साइड से बनती है, right? Ozone is formed when NOx, comma, volatile organic compounds, right, interact in the presence of sunlight, right? So अब इससे burning of इससे NOx भी निकलती है, right? So ozone will also be formed and ozone also will be released and sulfur dioxide तो है ही है. So 1, 2, 3, 4 is the answer, right? So that is, let's see the explanation. So crop residue or biomass burning are the cheapest and easiest method to dispose the leftover crop residues, that is wheat, rice and sugarcane का, right? North India में majorly it is practiced after harvesting for land clearing and pest control, right? For land clearing and pest control के लिए भी सीधा क्रॉप रेसिड्यू जलाते हैं, राइट? जैसे क्रॉप पे जो भी आउटपुट है वो दे दिया, फिर जो क्रॉप रेसिड्यू जो है, जो पेड़ का पत्ते वत्ते स्टेम्स वेम्स रूट्स वगैरह है, तो उन पेड़ों को जला देंगे, राइट? बिकॉज ये चीपेस्ट है, इजीएस्ट है, राइट? देन बर्निंग ऑफ क्रॉप रेसिड्यू एमिट गैसेस लाइक सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, carbon monoxide, black carbon, methane, volatile organic compounds, ozone, aerosols, non-methane hydrocarbons, then polycyclic aromatic hydrocarbons, right? ये सब emit करते हैं. So जितना emit हो सकता है उतना सब emit करता है. So इसीलिए crop residue is very dangerous to health, right? ये चीज हमें याद रखना है, right? So सब चीजें, बहुत सारी चीजें emit करती है. So take every option possible. अगर क्वेश्चन क्रॉप रेसिड्यू में क्या क्या आता है तो टेक volatile organic compounds, methane, black carbon, that this and all, because ओजोन भी emit हो रहा है, NOx भी emit हो रहा है, carbon monoxide भी emit हो रहा है, CO2, all are emitting, right? Then next is coal ash. This is question asked in UPSC 2020. So coal ash में बारे में इधर और पढ़ेंगे. See, coal ash is what? जब कोल को बर्न करते हैं तो एश फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में जो आउटपुट बचती है वो है coal ash, right? So coal ash contains arsenic, lead and mercury, correct? Coal-fired power plants release sulfur dioxide and oxides of nitrogen into air. High ash content is observed in Indian coal ash. We have discussed high ash content is observed in Indian coal. चलो उसके बारे में भी सब डिस्कस करें. 1, 2, 3 is the answer. Let's discuss it. See, coal in itself is not a particularly toxic material. ठीक है, कोल कोई टॉक्सिक मटेरियल नहीं है, राइट? बट आफ्टर इट इज बर्न, व्हाट रिमेन्स इज द एश, राइट? जब बर्न करते हैं तो हवा में भी निकलेगी, राइट? हवा, जब कोल को बर्न करते हैं तो हवा निकलेगी, राइट? वेपर्स, राइट? उसमें भी नॉक्स, सॉक्स वगैरह सब प्रेजेंट होंगे. एंड जो बर्न होने के बाद, जैसे वुड बर्न किया, राइट? बर्न होने के बाद वुड क्या कोल के रूप में आएगा, और ज्यादा बर्न किया तो थोड़ा एश फॉर्म में आएगा, राइट? सो दैट एश इज द कोल एश और फ्लाई एश बोलते हैं, राइट? इट कोल एश इज ए फाइन पाउडर लाइक सब्सटेंस विथ ए सब्सटेंशियल अमाउंट्स ऑफ उसमें क्या होगा? ऑक्साइड्स ऑफ सिलिका, ऑक्साइड्स ऑफ अल्यूमिनियम एंड ऑक्साइड्स ऑफ कैल्शियम, राइट? इट ऑल्सो कंटेन आर्सेनिक, इट ऑल्सो कंटेन्स लेड, इट ऑल्सो कंटेन्स mercury भी है,
and it also contains boron, it also contains chromium, etc. So it is very toxic ash, right? So अगर मान ले ऐश ऐसा है, पानी इसके साथ मिल गया तो वाटर को पोल्यूट करेंगे, नीचे आ जाके ग्राउंड वाटर को पोल्यूट करेंगे विद आर्सेनिक, विद लेड, एक्सेट्रा, राइट? एंड अगर एयर में जाएगा तो ये सब भी हवा में निकाल के खराब होगा, राइट? सो विथ नियरली 55% ऑफ आवर टोटल पावर जनरेशन थ्रू कोल एंड lignite based thermal power plants, coal ash generation is very high in India, right? These power plants release large amount of sulfur dioxide and oxides of nitrogen into the environment. So, right, and Indian coal comparatively has higher ash content than imported coal, right? Imported coal, right? Indian coal ash content is 25 to 45%, right? And imported coal ash content is 10 to 20%, right? So क्यों है high ash content in Indian coal? It is due to drift theory of formation of coal deposits in India. Drift theory of, so coal seams formed due to drift theory contains higher ash as compared to in situ theory of formation, right? So then अब देखो, see this is question asked in 2020. अब 2015 में देखो क्वेश्चन आया fly ash, right? Same है, right? With reference to fly ash produced by power plants using coal as a fuel, which of the following statement is are correct, right? So fly ash can be used in production of bricks for building construction, right? Fly ash can be used as replacement for some of the Portland cement contents of concrete. Yes, fly ash is made of silicon dioxide and calcium oxide only and does not contain any toxic elements. No, we have discussed fly ash or coal ash, right? Is what it contains many toxic, right? Silica भी है, aluminum है, calcium है, but other arsenic, lead, boron ये सब भी है. So this is incorrect, right? So 1 and 2 are the correct answer. So now let's discuss fly ash का क्या क्या. See, fly ash is a byproduct of coal based power plant, right? So it is fine powder with substantial amounts of oxides of silica, aluminum and calcium, right? Fly ash and coal ash are same, right? So it also contains traces of arsenic, boron, lead, chromium, etc., which leads to air and water pollution if dissolved. So, right, with nearly 83% of India's fly ash is utilized by cement industries, right? We have already discussed government is promoting for 100% utilization. Now we are using 83%. कहाँ use हो रहा है? Cement industries, right? In reclamation of low-lying areas, right? In roads and flyover construction, right? इनका bricks बना के fly ash का तो we using. It is used in manufacturing of building materials and in construction activity like replacement of cement in concrete. So building manufacturing में भी वगैरह use हो रहा है, right? So this is the thing, right? So now let's see next question, that is magnetite particles, right? See, this is question asked in 2021. See, now this would be a content, right? So this is not covered in normal traditional, right? So then we will be now using with respect to, right? So now let's discuss. See, magnetite particles. Magnetite particles suspected to cause neurodegenerative problems. So next time in they can ask magnetite particles से neurodegenerative problems होता है, right? So होता है magnetite particles are generated as environmental pollution from which of the following, right? Which of the following, right? So now let's see the explanation only, right? See, magnetite pollution refers to presence of magnetic mineral called magnetite, that is Fe3O4, right? Magnetite pollution refers to presence of magnetic mineral called magnetite in the environment. Magnetite in the environment as a result of human activities such as mining, steel production and industrial processes, right? So mining से भी steel production में industrial processes से magnetite निकलती है. And magnetite, right? So magnetite is an oxide of iron. So जो भी उसमें iron का निकलने का possibility है उसमें magnetite होते हैं. Oxide of iron. It is the most magnetic of all the naturally occurring minerals on earth. So it is most magnetic of
and it is a natural magnet. Magnetite contains 72% metallic iron. So 72% iron है, right? So in India, magnetite is found in Karnataka, Andhra Pradesh, Kerala, Tamil Nadu, Goa and Rajasthan, right? So एक ऑप्शन ऐसा देख सकते हैं, इंडिया में मैग्नेटाइट मिलती नहीं है, राइट, बट इंडिया में मैग्नेटाइट मिलती है, राइट. सो नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन कैन बी ऑन मैग्नेटाइट. ठीक है, अभी क्वेश्चन इज कहां कहां से निकलती है, राइट, जनरेटेड कहां होती है, राइट. नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन कैन बी ऑन मैग्नेटाइट, राइट, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसकी वजह से अल्जाइमर्स हो रहा है मैग्नेटाइट पोल्यूशन की वजह से. सो यूपीएससी हैज दिस इन इट्स माइंड, राइट. देन कहां कहां से निकलती है? सो दैट इज ब्रेक्स ऑफ मोटर व्हीकल्स. व्हेन ब्रेक्स वे डाउन they can release fine particles into the air including magnetite. भाई आयरन से ब्रेक्स बन रहा है, राइट, ड्यू टू द आयरन यूज्ड इन ब्रेक पैड्स एंड अदर कंपोनेंट्स. सो जहां भी, बिकॉज ये आयरन ही है ज्यादा, राइट, सो मैग्नेटाइट जहां भी आयरन है तो उधर मैग्नेटाइट निकलती है, राइट. सो देन इंजन्स ऑफ मोटर व्हीकल्स, राइट. सो कंबशन प्रोसेसेस can generate variety of particulate matter including magnetite particles, right. कोल में भी थोड़ा आयरन पार्टिकल्स टाइप थोड़ा तो होंगे, मैग्नेटाइट पार्टिकल्स निकलेंगे, स्पेशली फ्रॉम डीजल इंजन्स व्हिच कैन प्रोड्यूस मोर पार्टिकुलेट मैटर देन गैसोलीन इंजन्स, राइट. उधर से भी इंजन्स ऑफ मोटर व्हीकल्स है. देन पावर प्लांट्स, fossil fuel fired power plants, especially those from burning coal, can emit magnetite particles as part of fly ash and other combustion byproducts, राइट. कोल भी बर्न करे तो कहीं ना कहीं थोड़ा मैग्नेटिक पार्टिकल्स या आयरन भी होगा, राइट, उससे मैग्नेटिक पार्टिकल. देन माइक्रोवेव स्टव विद इन होम्स, while microwaves do emit some electromagnetic waves निकालती है, but मैग्नेटाइट पार्टिकल्स नहीं निकलते. So they are not known to generate magnetite particles as a pollutant, right. So इससे नहीं निकलते. So this is incorrect. Sorry, ये incorrect है. 3 पावर प्लांट से तो आती है, right. So 3 is incorrect, 3 is incorrect, 3 is incorrect. So इधर से आ गया, right. इधर से आती है इंजन्स, एंड टेलीफोन लाइन से भी नहीं आती. सो लेट्स से टेलीफोन लाइन से क्या है? टेलीफोन लाइन्स, देयर इज नो एविडेंस to suggest that telephone line generate magnetite particles as an environmental pollution, right. And extra information is magnetite pollution can lead to neurodegeneration and cardiovascular diseases, right. सीधा जाके ब्रेन पे अटैक करती है, ब्रेन को अटैच होके ब्रेन का जो फ्री रेडिकल्स है वो बढ़ाती है, which will lead to degeneration of brains, right. Neurodegeneration, right. Detection of abundant magnetite particles in human brain raised concerns because of suggested links to Alzheimer's disease, right. So this was in news, right. So magnetite pollution causing Alzheimer's disease, right. So that's why this is important, right. So magnetite and everything related to magnetite pollution we have covered. So next time question can be on magnetite pollution, right. So now let's see question asked in 2020, that is, which of the following are reasons or factors for the exposure to benzene pollution, right. So benzene pollution again important, right. Benzene volatile organic compound, right. So now let's, what we can do is let's watch a video, right. Benzene pollution, benzene क्या है आपको आइडिया आ जाएगा, right. So let's watch a video and then we will discuss it. So what is benzene, the chemical that everybody is so worried about? Benzene is found in crude oil and is a major part of gasoline. It's also a carcinogen. In simple terms, it's known to cause cancer, mainly leukemia. During the refining process, benzene is extracted from crude oil, then stored to make other products like plastics, dyes, detergents, rubber, drugs, and pesticides. Most of us are exposed to it in small amounts every day, just by breathing. Everything from car fumes on our daily commute to cigarette smoke, industrial emissions, and even a wood log fire. But levels inside your home might even be higher. We're talking about things like glue, paint, furniture wax, and detergents can all have benzene. Right? You have watched a video, right? Now discuss, say, benzene. So benzene is what? Benzene is a, in video also you have seen benzene is a colorless or light yellow liquid. Benzene is a liquid at room temperature, liquid at room temperature, right. Benzene is a liquid. और ये कहां से बन रहा है benzene liquid? ठीक है, it is outcome of oil refining process, right. Oil refining,
राइट। जैसे ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं हम, क्रूड ऑयल, राइट, क्रूड ऑयल को वेरियस स्टेजेस में बर्न करके कभी पेट्रोल कभी डीजल वगैरह निकलता है। सो वन एट वन स्टेज बेंजीन इज ऑल्सो रिलीज। सो इधर से आता है बेंजीन, राइट। सो उधर से आता है। एंड नेचुरल सोर्सेस ऑफ बेंजीन इंक्लूड वॉल्केनोस एंड फॉरेस्ट फायर्स। वॉल्केनोस एंड फॉरेस्ट फायर से भी बेंजीन आता है। इट इज फाउंड इन क्रूड ऑयल्स एंड इज बाई प्रोडक्ट ऑफ ऑयल रिफाइनिंग प्रोसेस, राइट। सो बेसिकली बेंजीन दो जगह से आते हैं, जिनमें भी क्रूड ऑयल होता है, राइट, उनसे आता है, एंड जिनमें भी कोल वगैरह होता है वो बर्न करने से, मतलब जहां भी चीजें मटेरियल बॉयल हो रही है बर्न हो रही है उधर से भी आता है, राइट, दैट इज बेंजीन, राइट। इट dissolves only slightly in water and will float on top of water, right, it is highly flammable, आग जल्दी लगेगा। benzene is formed from both natural process and human activities we have discussed, right। अब देखो benzene क्वेश्चन क्या है, which of the following are reasons for the exposure to benzene pollutions, exposure to benzene pollution, right। So automobile exhaust, right, so benzene is well known component of gasoline and is emitted in automobile exhaust। अब देखो ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट में क्या हम लोग क्या बर्न कर रहे हैं, क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल से ही बेंजीन निकाल रहे हैं, राइट। पेट्रोल डीजल, थोड़ा बेंजीन तो पेट्रोल डीजल में भी बचेगा, राइट, जब वो बर्न करेंगे सो बेंजीन बाहर आएगा, राइट। सो देयरफॉर एरियाज विथ हेवी ट्रैफिक आर enclosed spaces like garages can have higher levels of benzene pollution, right। Then tobacco smoke, so tobacco smoke is a significant source of benzene exposure for both smokers and those exposed to passive smoking। It is one of the most hazardous sources of indoor air pollution in terms of benzene। तो benzene again we have seen forest fire से आ रहा है, राइट, जो भी चीजें पत्ते वत्ते जला दिया उससे भी बेंजीन आएगा, राइट, दैट वी नीड टू रिमेंबर। सो सिगरेट स्मोकिंग, टोबैको स्मोकिंग, we are burning a tobacco, right, so that is। then wood burning, burning wood release benzene into the atmosphere, right। फॉरेस्ट, अगेन फॉरेस्ट को जला दिया तो बेंजीन आएगा, राइट, या वुड को बर्न किया तो बेंजीन आएगा। देन अगेन यूजिंग वार्निश्ड wooden furniture, right, again in videos also we have seen benzene is released। benzene is volatile organic compounds, volatile organic compounds are released from paints, varnishes etc, right। अब देखो यूपीएससी इसमें की आंसर की में they have given only 1 2 and 3, right, using varnished wooden products, using products made of polyurethane, ये कंसिडर नहीं किया, बट varnished wooden products में भी बेंजीन पोल्यूटेंट हो सकता है, राइट, राइट। इनफैक्ट जो कारपेट्स वगैरह है उधर से भी बेंजीन निकालती है, राइट। सो इन वीडियो आल्सो वी हैव डिस्कस। सो आई थिंक अगर यूपीएससी सेम क्वेश्चन पूछा है तो देन यू कैन स्किप दैट, अदरवाइज you need to be benzene क्या है, benzene is a indoor air pollutant also, right, you need to keep that in mind and answer accordingly। I don't know, because if you ask me, right, then I would take 1 2 3 4 and 5 in this, right, right, but here because ये पॉलीयूरेथेन में भी बेंजीन पोल्यूशन निकलती है, राइट, एक्सपोजर हो जाता है, राइट, बट वो ये कि एक्सप्लेनेशन में कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आल्सो दे आर गिविंग की इट इज वेरी स्मॉल क्वांटिटी, राइट, बट स्मॉल क्वांटिटी भी ये तो है भाई, एक्सपोजर तो है, राइट, इंडोर एयर पोल्यूशन में इनफैक्ट है, राइट, यूजिंग वार्निश्ड वुडन फर्नीचर्स एंड पेंट्स एक्सेट्रा, वार्निशेस वी यूज बेंजीन, राइट। सो right, varnishes and paints can contain benzene and other volatile organic compounds। देखो varnishes में we are using, right, contain benzene and other volatile organic compounds, especially if they are solvent based। However, once these varnishes have dried and cured, the amount of benzene they emit is significantly reduced। अब देखो dried and cured बोल रहा है, ठीक है, अमाउंट ऑफ बेंजीन एमिट इज सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड, कम होगा, बट द रिस्क ऑफ एक्सपोजर फ्रॉम वार्निश्ड वुडन फर्नीचर इज जनरली लोअर कंपेयर टू डायरेक्ट सोर्सेस लाइक स्मोक एग्जॉस्ट, बट इट कैन स्टिल कंट्रीब्यूट टू इंडोर लेवल्स ऑफ बेंजीन, indoor air levels of benzene, especially in newly furnished or renovated spaces। So I think we should take this option, right, but right, see ऐसा controversial questions तो होंगे ही होंगे एक तो, सो हमारा कंटेंट इतना एनरिच होना चाहिए, इतना डाइवर्सिफाइड होना चाहिए ताकि ये एक दो क्वेश्चन भी चले जाए तो वी नीड टू एम फॉर लाइक मोर देन 100 मार्क्स, राइट। सो
ठीक है, ऐसा क्वेश्चंस एवरी ईयर देर विल बी वन और टू क्वेश्चंस लाइक दिस, राइट? सो देर यू जस्ट नीड टू ट्रस्ट योर इंट्यूशन एंड मार्क, राइट? यू शुडंट रिग्रेट कि ये करना था वो करना था, बट यू विल अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस, राइट? एंड राइट, बट उसके बावजूद भी मान ले एक आपके फेवर में आएगा, एक आपके अगेंस्ट में जाएगी, एंड इसके बावजूद भी यू नीड टू क्लियर, राइट? जो भी टॉपर्स होता है उनके साथ भी यही होता है, दे आर ऑल्सो नॉट अवेयर, वो भी कुछ मार्क करके आते हैं इधर, राइट? उनको भी नहीं पता होता है कि भाई इसमें होता है उसमें होता है, राइट? बट स्टिल ओवरऑल यू नीड टू अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस, ओवरऑल यू विल गेट पॉजिटिव, राइट? एंड तैयारी ऐसा करके जाना है कि सारे अच्छे से करें, राइट? जो ये क्वेश्चंस होने के बावजूद भी योर स्कोर्स डजंट फ्लक्चुएट, राइट? योर नॉलेज हैज टू बी दैट डाइवर्स, राइट? देन नेक्स्ट इज सी यूजिंग प्रोडक्ट्स मेड ऑफ polyurethane, right? Polyurethane foam used in furniture, mattress and various building materials. Again, अब देखो इनमें होता है बेंजीन, right? Can emit volatile organic compounds, right? Volatile organic benzene है. However, benzene is not typically a significant component of the emissions from polyethylene products. The primary concern with polyethylene often relates to isocyanates used in production and other VOCs rather than benzene specially. Again, थोड़ा तो होता है benzene इसमें भी, right? So अब वो ये यूपीएससी आंसर ऐसा दिया तो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वाले भी थोड़ा वो कर रहे हैं, राइट? सो दिस इज माय टेक ऑन बेंजीन. बेसिकली इधर हमें बेंजीन के बारे में पता होना चाहिए, राइट? बेंजीन, राइट? नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट? सी दिस इज with reference to furnace oil. Consider the following statements. So it is product of oil refineries as some industries use it to generate power as it use causes sulfur emissions into environment, right? Because basically हम crude oil refineries oil को burn कर रहे हैं, right? sulfur dioxide sulfur emissions तो होंगे, right? Product of oil refineries, some industries use it to generate power, वो देखते हैं, ठीक है? See, furnace oil are also known as fuel oil or heavy oil, is a dark viscous residual product of crude oil distillation, right? Crude oil distillation से आता है fuel oil और furnace oil, ठीक है? diesel based power plants use furnace oil to generate power. Example is the Basin Bridge diesel generator power plant of तमिलनाडु. सो हमें एग्जाम्पल भी है तो ये ऑप्शन सही है. तो ये यू नीड टू कीप इन माइंड, डीजल बेस्ड पावर प्लांट, द बेसिन ब्रिज diesel generator power plant, so use furnace oil. So next time it can be furnace oil can be used in power generation. Yes, you need to have this fact, right? Then oxides of sulfur, SO2 emissions are direct result of sulfur content in the fuel oil. During the combustion process, this fuel bound sulfur is rapidly oxidized to sulfur dioxide, right? Then next is steel slag. Question asked in 2020. Right? Steel slag can be the material for which of the following? Right? Can be the material for which of the following? Construction of base road, as improvement of agricultural soil, as production of cement. Right? So option 3. So steel slag is a byproduct of steel making. Is produced during separation of molten steel from impurities of steel making furnaces. Right? And it can be used in asphalt roads, etc., right? Let's discuss that, right? Let's see. Steel slag, byproduct of steel making, is produced during then asphalt roads, right? Asphalt roads contain steel slag as one of the most important ingredient, ठीक है? road construction में steel slag use होता है. Steel slag is also used in agriculture sector. It is used as silicate fertilizer and it is capable of providing silicon to the plants, right? It has ability to correct soil's acidity as it contains some nutrients for the plants, right? Steel slag has been used as a raw mix component up to 10% in the manufacture of cement clinker. Steel slag is also used in the manufacture of Portland slag cement. Steel slag has been used successfully to treat acidic water discharges from abandoned mines. Right? Steel slag has been used successfully to treat acidic water discharges from abandoned mines. Right? So now question UPSC 2021. Next question, that is why there is concern about copper smelting plants. Right? Copper smelting plants के बारे में. Right? See here, अब देखो हम
ये तो वी डोंट नो, इट में रिलीज लीथल क्वांटिटीज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इनटू एनवायरनमेंट। अब ये गलत है, राइट। सी नोबडी नोस दिस, राइट। अब आई नो मैक्सिमम लोग 1 2 3 मार्क करके आए होंगे इस क्वेश्चन के लिए, राइट। इट में रिलीज, सी में दिया हुआ है एंड कैन में ये सब भी एलिमिनेशन ट्रिक्स वगैरह चल रहा है, राइट। Everyone learns these elimination tricks and they use also most of the aspirants, right? But answer is 2 and 3, right? So अब इसीलिए ताकि ये प्रिपेयर करना है ताकि नेक्स्ट टाइम आए तो यू कैन से इट में रिलीज लीथल क्वांटिटीज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इनटू एनवायरनमेंट। नो, ये नहीं निकालता बिकॉज वो पढ़ लेता है। सो इसको एज ए नॉलेज की तरह यूज करना है सो दैट अगर नेक्स्ट टाइम कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट्स में आ जाए तो यू कैन eliminate these kind of options, right? See, smelting is a process of applying heat to ore in order to extract a base metal. So copper smelting plants में we apply heat, right? Smelting करते हैं heat to the ore, copper ore को, right, to extract copper, right? So in copper smelting plants, copper concentrates are fed through flash smelting furnace with oxygen enriched air, right, giving copper matte with a grade of 65% and slag consisting of iron oxide, silica and other compounds, right? So slag जो वेस्ट है उसमें आएगा आयरन ऑक्साइड, सिलिका एंड अदर कंपाउंड्स। सो कॉपर एक्सट्रैक्ट करते हैं कॉपर स्मेल्टिंग में, कॉपर कॉन्सेंट्रेट्स को गर्म करके, राइट। दैट इज कॉपर स्मेल्टिंग, राइट। इन कॉपर स्मेल्टिंग प्रोसेस फर्स्ट carbon combusts with oxygen in the air to produce carbon monoxide, right? पहले कार्बन मोनोऑक्साइड आती है, राइट, विद कार्बन ऑक्सीजन से बर्न होके, राइट, बिकॉज ऑक्सीजन के प्रेजेंट में कर रहा है, राइट। then carbon monoxide reacts with ore and removes one of its oxygen atoms, right, one of its oxygen atoms releasing carbon dioxide, right। कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होगा बिकॉज, तो इसीलिए ये पूछा है, राइट। कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज नहीं करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड में फॉर्म होगा, सो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, हेंस इट डज नॉट रिलीज लीथल क्वांटिटी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इन द एनवायरनमेंट, राइट। सो ये पॉइंट याद करना है, भाई कॉपर स्मेल्टिंग में कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, राइट। सो दिस पॉइंट यू नीड टू रिमेंबर, राइट। देन द स्लैग produced contain concentrates of toxic elements, arsenic, lead, barium, etc. Slag can release these toxins into environment and the natural weather, soil pollution, groundwater pollution, surface pollution. Copper smelters are one of the largest sources of sulfur dioxide and trace elements, right? So from this we can say copper slag can cause the leaching of some heavy metals into environment. Yes, it may release sulfur dioxide as a pollutant, right? So ये incorrect है. So copper smelting plants, right, they don't release carbon monoxide, rather they release carbon dioxide, right? That you need to remember. Now let's see. Next, see, this is question on acid rain. See, question asked in 2013, right? 2013, acid rain is caused by pollution of environment by acid rain. We have seen NS, that is NOx and SOx, right? That is NOx and SOx. See, carbon dioxide, nitrogen, no. Carbon monoxide, carbon dioxide, no. Ozone, no. Carbon dioxide, NOx and SOx, NS. NS, so N represents NOx and S represents sulfur dioxide, SO2, right? NOx, nitrous oxide, and so option D is the answer, right? So acid rain is the rainfall that has been acidified. Normal rainwater pH 5.6 due to presence of hydrogen ions formed by the reaction of carbon dioxide, right? We have already discussed. When the pH of rainwater drops, it is acid rain. Acid rain occurs when NOx and SOx interact with rainwater to form nitric acid and sulfuric acid. अब देखो 2013 का क्वेश्चन है, 2022 में देखो, ठीक है। Consider the following: excess of which of the above in the environment is the causes of acid air? Acid air is what? NS, NOx and SOx. So nitrogen oxide and sulfur dioxide. So ozone, carbon monoxide नहीं है, right? So 2 and 4. So 2 and 4, option B is the answer, right? No need for explanation, right? Repeated of question, simple, NOx and SOx. Acid rain is NS, NOx and SOx, right? ये चीज याद करना है, right? Now let's see next question. See, photochemical smog. Again, see, there is a question in 2013, that is photochemical smog is a resultant of reaction among, see, photochemical smog is what? Sunlight smog, right? Photochemical smog is Los Angeles smog, right? यही है photochemical smog, right? Photo light,
केमिकल, राइट। नाउ अब देखो उल्टा क्या है उसका, उल्टा दैट इज लंदन स्मॉग, लंदन स्मॉग इज सल्फर डाइऑक्साइड स्मॉग, सल्फर SO2 से बनती है, राइट। सो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सो इट इज, एंड फोटोकेमिकल स्मॉग किस किस से बनती है, राइट, वी हैव डिस्कस्ड फोटोकेमिकल स्मॉग, सी ओजोन के लिए सनलाइट चाहिए, राइट, एंड नॉक्स एंड पेरऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, इट इज ए volatile organic compound, right. So option A is the answer, that is photochemical smog is formed in the presence of, हमने already discuss किया, NOx, ozone and peroxyethyl nitrate in the presence of sunlight. In the presence of sunlight, it is very important, photochemical smog, right. So अब देखो ये CO and oxygen, right, oxygen 9, right, here CO, CO2, CO2 भी नहीं है, CO भी नहीं है, right, at low temperature, low temperature नहीं, हमें sunny temperature चाहिए, right, high concentration of NO2, O3 and CO, CO नहीं है, right, in the evening, evening sunlight नहीं है, so evening नहीं बन सकता. So photochemical smog is a resultant of reaction among NOx, ozone and volcanic organic compounds, peroxyacetyl nitrate in the presence of sunlight, right, option A. So smog is combination, so जो भी sulfurous smog and photochemical smog. Question is on photochemical smog. Like photochemical smog is NOx, ozone and pan interact in the presence of sunlight. It is also called summer smog as it needs sunlight for the formation. Right. Now let's discuss next question. See, this is question asked in 2022. 2022 in the context of WHO air quality guidelines. Consider the following statements. Right. So this is question on PM 2.5 and PM 10. राइट, तो इसके बारे में पीएम इनके बारे में सो वी विल डिस्कस वैसे क्या होता है. सी द 24-hour मीन ऑफ PM 2.5 शुड नॉट एक्सीड 15, ये द एनुअल मीन शुड नॉट एक्सीड दिस, राइट. सो दिस इज WTO का गाइडलाइंस. अब ये हमें पता नहीं है, वी कैन नॉट रिमेंबर ऑल्सो दिस थिंग्स, राइट. सो वी इन एग्जामिनेशन ऑल्सो वी डोंट डू एनीथिंग ऑन दिस ऑप्शन, राइट. सो हम दूसरे ऑप्शन से करने की कोशिश करेंगे, राइट. से इन ए ईयर द हाईएस्ट लेवल ऑफ ओजोन पोल्यूशन अकर ड्यूरिंग द पीरियड्स ऑफ इनक्लेमेंट वेदर. अब देखो हमें ओजोन पोल्यूशन के बारे में पता है, दैट इज O3 पोल्यूशन, ओजोन पोल्यूशन, दैट इज ओजोन पोल्यूशन है, दैट मींस बैड ओजोन की बात हो रही है, राइट. बैड ओजोन इज ग्राउंड लेवल ओजोन, एंड ओजोन कब फॉर्म होती है, ओजोन किस किस से फॉर्म होती है, राइट, दैट वी नो. And in a year, the highest level of ozone occurs during the periods of inclement weather. अब देखो inclement weather का मतलब क्या है, right? If we know it, then we can easily answer it. So inclement weather is unstable, right? Unpleasant, cold, rainy weather, right? Unstable, right? Inclement weather is unpleasant, cold, comma, रेनी वेदर, राइट. अब हमें पता है भाई ओजोन के लिए क्या चाहिए, ओजोन के लिए सनलाइट चाहिए. सो इनक्लीमेंट वेदर में ओजोन नहीं बन सकता, सो इस ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे. सो द ऑप्शन 2 इज एलिमिनेटेड. सो वी हैव एलिमिनेटेड 2 ऑप्शंस. सो ओजोन पे क्वेश्चन है, सो जिन पे हमें एग्जैक्ट नॉलेज है उस पे हम एक्ट करेंगे, राइट, राइट. देन एक्सेसिव ओजोन इन द एयर कैन ट्रिगर आस्थमा, यस, राइट. सो 1 and 4. अब देखो 3 चेक करते हैं. सी 3 इज PM10 कैन पेनिट्रेट द लंग बैरियर एंड एंटर द ब्लड स्ट्रीम. अब देखो सो PM 2.5 एंड PM 10.5 के बारे में वन मेजर डिफरेंस वी विल स्टडी नाउ, राइट. दैट इज ठीक है. अब PM 10 है, राइट, ये क्या लंग्स तक जा सकती है और लंग्स में चुप सकती है, राइट. अब बट PM 2.5 क्या है, ये PM 10 से छोटा है, राइट. सो इट कैन पेनिट्रेट द लंग बैरियर, राइट, लंग से भी करके इट कैन एंटर इनटू द ब्लड स्ट्रीम. सो PM 10 है वो ब्लड स्ट्रीम में एंटर नहीं कर सकता, ठीक है, बड़ा है, राइट. बट PM 2.5 कैन एंटर. सो दैट्स व्हाई PM 2.5 आर मोर डेंजरस बिकॉज PM 2.5 कैन एंटर आवर ब्लड स्ट्रीम ऑल्सो, राइट. सो दैट्स यू नीड टू रिमेंबर. सो दिस इज इनकरेक्ट. सो जब ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा, सो 3, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. सो दिस डेटा इज करेक्ट, right. So that's what we need to know. So here we have understood about PM 10 and PM 2.5 ka difference, major difference. So now let's read. According to WHO air quality guidelines,
ठीक है, द एवरेज 24 आवर एवरेज ऑफ PM 2.5 शुड नॉट एक्सीड 15 माइक्रो पर सेकेंड। सी, ये फैक्ट किसी को भी नहीं पता होगा, राइट, एग्जाम में, राइट। हमें क्या करना है, हमें जो चीजों के बारे में हमें नॉलेज है, हमें वो जोन के पास वो जोन के बारे में नॉलेज है, सो वी नीड टू एक्ट ऑन दोस, राइट। सो द ओजोन इज वन ऑफ द मेजर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग, राइट। हेंस इन a year highest level of ozone pollution occur during periods of sunny weather, not during inclement weather, that is unpleasant weather with cold wind and rain। अब देखो, inclement weather हमें ओजोन के लिए स्टेबल वेदर भी चाहिए, राइट, अनप्लेजेंट वेदर में नहीं बनेगा ओजोन या फोटोकेमिकल स्मॉग जो भी है, राइट। सो व्हाइल PM10 कैन पेनिट्रेट एंड लॉज डीप इनसाइड द लंग्स, ठीक है, इनसाइड द लंग्स में पेनिट्रेट कर सकता है, ठीक है। द इवन मोर हेल्थ डैमेजिंग पार्टिकल्स आर दोज विद डायमीटर PM 2.5 कैन पेनिट्रेट द लंग बैरियर, ठीक है। लंग बैरियर को PM10 वो नहीं कर सकता, PM भाई लंग में डीप इनसाइड लंग्स में जाके चिपक सकती है, राइट, होल्स में। सो ये PM 2.5 और लंग बैरियर को भी क्रॉस करके एंटर द ब्लड स्ट्रीम, सो हेंस स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, statement 3 is incorrect, right? So this fact you need to remember, right? So then excessive ozone in the air has marked effect on human health. It can cause breathing problems, trigger asthma, reduce lung function and cause lung disease, right? Now, right, so with this we are done with this class. In next class we will be dealing with water pollution, soil pollution and other related topics, right? So see you in the next class. Bye.